Honourable Minister, for your reply. Thank you, Honourable Vice Chairman, sir. First of all, I am extremely grateful to all the honourable members who have given very fruitful, very important suggestion, as well as raised certain questions and queries and concerns also, which is plaguing the Indian system of arbitration, and also they have given me some way forward. I am a great learner in that sense. I always welcome all the suggestions, and I've noted down and also applied my memory to register all the important suggestions which have come from across the sides of the House. I would like to thank Vivek Tankha ji, Sushil Kumar Modi ji, Sukhendra Shekhar Roy ji, P. Wilson ji, Sushil Kumar Gupta ji, Prasant Nanda ji, V. Vijayasai Reddy ji, Professor Manoj Kumar Jha ji, Vikas Ranjan Bhattacharya ji, Vinay Vishwam ji, Ramnath Thakur ji, Dr. M. Thambidurai ji, Rakesh Sinha ji, Vandana Chavan ji, Ghanshyam Tiwari ji, Priyanka Chaturvedi ji, Sakaldeep Rajbhar ji, J.K. Vasan ji, Ram ji, and Mahesh Jetmalani ji for making significant contributions while taking part in the discussion. First of all, sir, the immediate concern which comes into our mind is why so far India could not emerge as an international hub for arbitration. ये कई लोगों ने सवाल किया है. आज हम दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है. We are the 5th biggest economy in the world. Yet we are not still the international hub of arbitration. ये जायज है, सबको ये सवाल उठेगा ही. और मैंने भी सर कई सालों से ये सोचा है कि छोटे छोटे देश और छोटे छोटे शहर अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन का सेंटर बन चुके हैं, हम क्यों उभर के नहीं आ पाया. कई कारण है और कुछ कारणों का जिक्र भी हुआ, कुछ कारण मैं बताऊंगा. लेकिन अगर हम सरकार और पूरा सदन चाहेगा और हम एकजुट होकर के एक आवाज से हम कोशिश करेंगे, तो मैं आपके सामने में कह सकता हूं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हम कदम उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत दुनिया का आर्बिट्रेशन का सेंटर जरूर बनेगा. और उसी दृष्टिकोण से ये आज अमेंडमेंट लाया गया है. कोई पूछ सकते हैं कि ये नाम चेंज, अब नाम चेंज लेकर के सवाल भी उठे हैं. अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो फिर हम लोग का सबका नाम है. अगर हम लोग का नाम का कोई वैल्यू नहीं है तो फिर किसी सेंटर का भी कोई वैल्यू नहीं होता है. मैं तो ये मानता हूं कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है और नाम सही नाम रखेंगे तो वो अच्छा नाम से अच्छा काम भी होता है. और जब कई सदस्यों ने इसका जिक्र भी किया कि जब भारत बहुत विशाल देश है, हम कोई सिंगापुर नहीं है, देश ही शहर है. ये विविधता से भरा इतना विशाल देश है, इतना बड़ा देश, इतना शहर है. कहीं चेन्नई है, कहीं मुंबई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, श्रीनगर है, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, कितना हमारे पास शहर जो वर्ल्ड क्लास शहर बनते जा रहे हैं. तो अपने अपने शहर में सबका सेंटर है. सबने आज हमारे पास हमारे देश में कई ऐसे सेंटर है जो चल रहे हैं, आर्बिट्रेशन का काम चल रहे हैं. अपना अपना सेंटर का नाम है. उदाहरण के तौर पर बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन मुंबई,
बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुंबई, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई। तो मुंबई शहर में इतना नाम है। अब कोलकाता का बात कीजिए, द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलकाता, बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलकाता, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन कोलकाता। ऐसा कितने शहरों में आर्बिट्रेशन का सेंटर बना हुआ है। दिल्ली में ही दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना हुआ है। जब यह बिल पारित हुआ, सारे सदस्यों ने सोचा और सरकार ने भी सोचा उस समय कि हमारा राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली के नाम से अगर हम ड्राइव करेंगे तो आगे बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते जब ये देखा गया कि ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन ऑलरेडी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और एक नई दिल्ली के नाम से चलाएगा, तो उसमें विरोधाभास होगा या कंफ्यूजन होगा या वो अच्छा भी नहीं लगेगा कि सेम नाम के दो संस्था एक ही शहर में चल रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने जिक्र किया, एक विशाल देश होने के कारण पूरा भारतवर्ष को समावित करके अगर हम कहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर मेंबर्स ने समर्थन किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आज तक हमारा देश में आर्बिट्रेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मूल कारण है जिसके वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाया, हमारे ही देश के बड़े बड़े बिजनेस लोग, हमारे देश के लोग विदेश प्रिफर करते हैं। लोग सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। कई कारण है सर, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं जिससे हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के दिन में जो बहुत जिसको एक प्राथमिकता दिया जाता है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, जो पिछले साल 469 केसेस वहां रेफर हुए हैं। हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में 277 केसेस रेफर किए गए हैं। लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 377 केसेस। इस तरीके से कई जो केसेस है जो हमारे देश के लोग भी बाहर जाते हैं, लेकिन संख्या के दृष्टि से आप देखेंगे दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से उसका देखरेख होता है, पिछले साल 3704 केसेस रेफर हुए हैं। लेकिन अब इसको बिजनेस का वॉल्यूम के हिसाब से कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश ही इतना विशाल है कि हमारा अपने अंदर में अगर विदेश से नहीं भी आए, हम तो इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, अगर हमारे देश के लोग बाहर ना आ जाए, इतना भी अगर हम कर सकते हैं प्राथमिकता देकर के, ये भी हमारे लिए बहुत एक सफलता प्राप्त होगा। इसलिए सर सबसे पहले तो हम हमारे देश से बाहर जाने वालों को हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि सही आर्बिट्रल अवार्ड आपको हमारे व्यवस्था तहत यही मिलेंगे, और उसके बाद हम विदेशों से हम उन लोग को यहां आमंत्रित करेंगे, उसके लिए विश्वास कायम करना होगा। जैसे हमारे सदस्यों ने सवाल किया और विवेक तनखा जी ने भी इसका जिक्र किया कि आर्बिट्रेशन सेंटर का जो महत्व है, उसका इंडिपेंडेंस, उसका कैरेक्टर, उसका क्वालिटी, कई चीजें हैं जिसको हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने जिक्र किए हैं। मैं मानता हूं कि सचमुच में इस क्षेत्र में बहुत साल तक हमको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा घोषणा किया। 2016 का जो घोषणा है कि उन्होंने कहा कि भारत अब अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और भारत दुनिया का आर्बिट्रेशन का सेंटर बनना ही होगा। और उसी सोच के साथ, उसी ऐलान के साथ 2019 में ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का जो पहल शुरू हुआ और कानून के रूप में लाया और इसका पारित हुआ। इसमें सर सिंगापुर का मैं एग्जांपल देता हूं, क्यों इतना सेंटर अट्रैक्टिव कैसे बन गया। एक तो उसका जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो जहां स्थित है, लोग सोचते हैं कि बहुत कन्वीनियंट है सिंगापुर में पहुंचना, हर दुनिया का हर कोने से पहुंचना आसान है, खास करके एशिया मुल्क के अंदर में। दूसरा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी।
इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के ओर से इतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट किया, इतना एफिशिएंट है कि सब लोग जाना चाहते हैं कि वहां हम जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और तुरंत उसका न्याय मिल जाएगा। फिर वहां जो बैंक्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का काफी संस्थाएं, उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, तो उसके वजह से एक अट्रैक्शन भी मिलता है। कॉमन लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है, हम लोग भी उसी लॉ से चलते हैं। कॉमन लॉ से हमारा भारतीय जो हमारा सिस्टम है वहीं से इंस्पिरेशन होके हम अभी हमारा सारा व्यवस्था चल रहा है। तो हम अगर सिंगापुर में उसी कॉमन लॉ ज्यूरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर सक्सेस है तो हमारा देश भी जरूर सक्सेस हो सकता है। इसके बाद में जुडिशरी का सपोर्ट, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया। आज एक आर्बिट्रेरियल अवार्ड दे देते हैं और उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर उसका सुनवाई कोर्ट में होगा, फिर कोर्ट में होने के बाद फिर हायर कोर्ट में जाएगा, तो फिर सर कोई पार्टी सोचेगा कि भाई इंडिया में जाके हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, फैसला हो भी जाता है, फिर उसको कोर्ट में चैलेंज होता है और फिर कोर्ट अपना समय लेता है, तो फिर सोचते हैं कि नहीं इंडिया जाके तो फंसना है, तो इसलिए बाहर जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये मैं उस रास्ते पे आज नहीं जाना चाहता हूं। जिस संविधान का बात है कि भारतीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर को, कोई भी फैसला, किसी भी तरीके मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, उसको कोर्ट हियरिंग कर सकता है, उसमें पाबंदी नहीं है। अब मैं यहाँ घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं संविधान का संशोधन करके कोर्ट का अधिकार को हम कम करना चाहता है, ये मेरे लिए आज यहाँ घोषणा करना संभव नहीं है। लेकिन ये विषय हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि अगर कोई केस किसी फोरम में तय हो जाता है, फिर से अदालत में फिर से ट्रायल करना है, तो लोग जरूर सोचेंगे कि किस हिसाब से भारत को हम अपना प्रिफर्ड डेस्टिनेशन माना जाएगा। तो इसके साथ साथ सर जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, सिंगापुर हो या हांगकांग हो या लंदन या पेरिस भी जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, वहां बहुत सिस्टेमेटिक वे से अपना वहां व्यवस्था बनाया हुआ है। हमारा देश में एडहॉक आर्बिट्रेशन को अब तक प्रिफर्ड किया जाता है। इसलिए मैं सर जब कभी कोई कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि हम भी अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमारा सोच और व्यवस्था ऐसा है कि एडहॉक को ज्यादा प्रिफर करता है इंडिया में। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म जो भी बनता है उस ओर हमको जाना होगा। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के ओर जाने के लिए हम सबको पहल करना होगा, क्योंकि अभी तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट अपॉइंट करते हैं, तो फिर पार्टी उस हिसाब से काम करते हैं और अपना अपना चॉइस होता है आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर्स का जो मामला आता है तो फिर हमारे पास उतना क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स भी नहीं है। और दूसरे जो हमारे जजों के बारे में टिप्पणी किया, मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर होने के नाते जजेस या फॉर्मर जजेस के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब जो भी रिटायर्ड जजेस हैं हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के, सब तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग 90% तो मैं कह सकता हूं कि वो आर्बिट्रेशन प्रिफर करते हैं, क्योंकि अब कोई असाइनमेंट देगा, महीने में 2 लाख रुपया मिलेंगे। अब आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक हियरिंग में ही 5 लाख मिल जाता है, तो महीने में करोड़ों कमाते हैं। तो ये जो आर्बिट्रेशन फीस का जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी आर्बिट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो जो है इतना एक्सपेंसिव है, तो सर ये न्याय के लिए कोई खर्चा करना पड़े तो इसमें तो चलो एक गरीबों के लिए तो हम लोग कहते ही है, लेकिन जहां जो बिजनेस में भी, जहां ये जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स है, यहां भी तो लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो हम तो ऐसे जगह में जाएंगे जहां कम एक्सपेंसिव हो, कम खर्चा लगेंगे। तो मैं मानता हूं कि हमारा देश का व्यवस्था और जो माहौल ऐसा है कि हम बाकी दुनिया से ज्यादा सस्ता में हम आर्बिट्रल अवार्ड दे सकते हैं, मैं ये मानता हूं, मेरे पास विश्वास है। तो इसलिए अगर हम आज ये बिल पास करते हैं, ये बिल जो हम अमेंडमेंट लाए हैं, इसके बाद हमारे जो बाकी कार्य जो कर चुके हैं और हमने काफी कदम उठा चुके हैं, आपको बताना चाहता हूं मैं संक्षेप में, जितना जल्दी हो सके हम अपना काम को शुरू करना चाहते हैं। हमारे सुकेंद्र जी और कई लोगों ने पूछा है कि हमने कार्य क्या क्या अभी तक किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, I would like to read in the English the steps we have taken. In 2019, you know how the ordinance was brought.
And to make a clarification to you, it is not under the pressure of the World Bank that we brought this bill or the procedure. It is government's considered opinion and decision to bring this bill. And if you see, since 2015, the ranking of ease of doing business, India was ranking 142 in 2015. Overall rank was 140. Today, the last assessment we got in 2020 was India's rank is 63. The rank enforcing contract in 2015 was 186. How can we feel proud? We were ranked 186. And today, we have managed to bring it to 163. So it is not under any international pressure, but it is the situation, the emergent situation, which compelled government to take decision. So it is a sovereign decision by the government of India, supported by this August House. So I would like to inform the honourable member and through you, sir, to the honourable House. The central government has already appointed its officer as custodian for the undertaking of ICADR under Section 11 of the Act, White Order dated 3/3/2019. Now, since the ordinance was replaced by the Act, we have established White Gazette notification. When I took over as the Minister for Law and Justice, I personally ensured that this is done, and the Gazette notification was issued on 13/6 of this year, 2022. And the following rules have been framed and notified under the aforementioned Act, laid before the Parliament during last session. Last session means the monsoon session. NDISE terms and conditions, salaries, allowance, everything has been done. Form of annual settlement, annual statement of accounts was also submitted. NDISE number of posts, recruitment of registered council and other officers, employees rules also been tabled in this August House. NDISE travelling and other allowance payable to part-time members was also tabled. And also the Ministry of Commerce, with the approval of Ministry of Commerce and Industry, Director General, FIEO, that is Federation of Indian Export Organization, as part-time member, that is ex-officio member, has been approved. Department of Expenditure, and they have conveyed to us that they will remain as ex-officio in the NDIC. Now, after passing of this bill today, it will be known as the India International Arbitration Center, and we have already granted 75 lakhs to the center, the NDIC center. And the proposal for appointment of chairman and 2 expert members, from the ministry we have already proposed, and it has been sent to DOPT, and it will go to the ACC, Appointment Cabinet Committee, and also so many steps have been already taken. What I would like to mention here is that I personally agree with exactly the suggestions which have come today. The arbitration center must be independent. If government has an influence in the arbitration center, definitely it will not be attractive. And why would people come if they know that government has a very serious influence in the center? We are very mindful for that. That is why during the proposal, I have personally conveyed to the proposed chairperson and the members that government will stay arm's length distance. We will maintain it. We will not come near you, because we know the moment the authority of the center is diluted by government intervention, it will lose its credibility. And today, you can't hide anything. And we don't want our center, which is center of national importance. After Parliament takes a decision, the sanctity of the center has to be maintained. That is why I can assure this August House that the authority, the independence, the credibility of the India International Arbitration Center will not be compromised. We are very mindful of that particular matter. And sir,
Now, I would like to come to some of the basic, which most of the honorable members have raised this issue, and my request is I will not be able to respond to each member because that will become very lengthy. But I would like to summarize what is the advantage of having institutionalized mechanism. That means institutionalized arbitration. It will have a predetermined arbitration procedure, which will be laid down by the center only. And there will be updated rules in lieu of the latest developments. An efficient panel of arbitrators and professional support will come up. And there will be world-class, well-built infrastructure. And also, sir, this will help in creating and enhancing the level of the situation in ease of doing business. Because we are talking about ease of living. Ease of living will come when there is a prosperity in the society. And when there is an ease of doing business atmosphere, definitely it will lead to the prosperity. That is why now, earlier, sir, as regards to enforcement of contract, I'm talking about the past and the present comparison. World Bank report states that India takes as much as 1,445 days to resolve a dispute, and 31% of the claim value for dispute resolution is spent during the process. So these are some of the realities which we have to be very mindful. And sir, I have personally interacted with the honorable judges of the Supreme Court and to some extent with the High Courts also. Without the support of the judiciary, this effort will remain half-hearted. We are very clear. The judiciary has to also understand what the legislature has gone through and what is our objective. Our objective is very clear. And I'm happy to inform that Indian judiciary has on many occasions, they have already displayed, they have already come forward to ensure that the alternative dispute resolution mechanisms in India is successful and arbitration must become robust. So that is, otherwise, if the courts are not supportive of our cause, then our efforts will remain failed or it will be almost half-hearted, sir. So there are certain bottlenecks and certain problems which is in existence in our country, sir. There is, sir, lack of credible arbitral institution. Although we have so many arbitration centers in India, which I have the list, but I'm sorry, I'm not criticizing them, but they are not termed, I'm not terming, they are not considered as credible institutions by different agencies or different bodies. And there are misconceptions relating to institution arbitration. And of course, there were lack of government supports. And sir, legislative support was lacking, which we are fulfilling today. So that is why I'm so grateful to this August House that while we are discussing about this serious and important matter, we are also saying that we are united in this effort. So we are definitely united, and the problems in ad hoc arbitration mainly is the proceedings get delayed. That is the main problem in the ad hoc practice which we have. And again, very sorry to say, the arbitrators are not treated as professionals, or they are not looked upon as professionals. And the awards, I'm sorry to say again, the awards are not of high quality. So if the arbitral awards are not of high quality, then there are negative comments from the judiciary. Then definitely there's a question of credibility which comes before us. That is why the arbitral awards must stand the scrutiny of the law. At least rationally, if we see things, we should see that, okay, the arbitral awards is of good quality. So, sir, there are many more things. I feel that I do not need to go at length. Of course, I have many points in hand, but just as taking advantage of your patient hearing, some of the honorable members raised certain questions about how much outputs the Indian courts are giving, naming of the high courts.
Of course, today's matter is related to the arbitration and naming of the, or renaming of the New Delhi International Arbitration Center. But I can assure you that government, presently under the leadership of Modi ji, the budgetary allocation, the proactive support to judiciary, this is very well known. No courts in India can say that they are wanting the support of Government of India, especially for infrastructure. Now, most of the pending cases are in the lower courts. Supreme Court has close to 70,000 cases. That too also I have made certain remarks in a very, very good gesture to Honorable Supreme Court, that you take up those cases which are relevant and which are appropriate for Supreme Court to take up. If Supreme Court of India starts hearing bail applications, if Supreme Court of India starts hearing all frivolous PILs, definitely it will cause lots of extra burden on the Honorable Court itself. Because Supreme Court by and large is treated as a constitutional court. And I have personally conveyed this message to the Honorable Chief Justice and the other judges of the Supreme Court, that we will be with the Supreme Court. We will be the courts of India. We will always be there to ensure that the independence of judiciary is not tinkered around with. We will be always protect the independence of judiciary and also to strengthen the judiciary. But when we talk about cases pending which is touching 5 crore, definitely people ask the question to Law Minister. And in the Parliament many questions come that why so many cases are pending. Now if you see more than 4 crore and 25 lakhs cases are pending in the lower courts, where Government of India has a stake. We give money, support to create better infrastructure. But we have to also ask the judiciary that please ensure that the deserving people are given justice and those unnecessary burdens are also taken care of, that they don't cause disturbances while the court is functioning or court is discharging its duties. The main duty of the court is they are the arbitrators. They are the people who are going to deliver justice. But I have always very openly stated that judgment or justice can be given from the ground also. It is not that you deliver justice from the courtrooms alone. You can go out to the field. Judges can also go out of the courtroom and deliver justice. That is the way we are talking about mobile courts, Lok Adalat. We are going to the field. I have personally gone to many places along with the Chief Justice of the High Court to ensure that the lower court judges are delivering justice on the ground. I'm extremely delighted that I have seen many instances. So people get excited. Some people get emotional that without requiring to go to the courts have come to our doorsteps. That is called justice at the doorstep of the people. So, sir, government will do everything. But when we talk about holiday being obtained by the judges, how much output a particular high court, a particular judge delivers, these are matters definitely which concerns every citizen of this country. Not only the honorable members of this house, but every citizen of this country deserves to know why so much pending of cases are there in our country. But at the same time, I will ensure that from the Government of India's side, we will do everything to reduce the pendency. Now, to reduce the pendency, series of steps have been taken. Numbers of initiatives have been started, which I'm not going to take time to explain because today is not a subject, but since the honorable members have raised these queries about the naming of the Madras High Court into Tamil Nadu High Court, or like today, honorable member of Parliament from Lok Sabha met me, requested Bombay High Court should be Maharashtra High Court, then Allahabad High Court should be, say, Uttar Pradesh, because city of the name it is changed, Calcutta High Court. So there are some names of the High Court which are named after cities. There are some High Courts which are named after this state. So there are variations. And I will definitely have a discussion with the Honorable Chief Justice of India. Government of India is always open to discussion. And of course, when honorable members raise this question, it is my responsibility to ensure that the suggestions are taken and to see that how far and to what extent we will definitely take action. And
the sentiments of the people are reflected. The honorable members represent the people. So when the sentiments of the people are reflected on this August House, it is the bounded duty and obligation on the part of Government of India to respond positively. So these are well taken. Why I am not able to give any assurance is because there are certain norms. I have to go through a certain process. And before that, if I make a statement or assurance on this August House, which may not be appropriate, sir. So with these few words, and also some of the queries which I have not responded to, rest assured, the points are registered. My officers have taken note. We will come back if necessary. I will respond privately, separately, and if necessary in writing also. But for today's, this important, small, limited but important amendment, I am extremely grateful to the honorable members of this August House for unanimously passing. Our left friends, 2 members have opposite, but in words they have opposite, but in spirit they have supported. So I consider today's discussion as a unanimous one. Thank you very much, sir, for giving me time, and thank you, Honorable House, for the patient hearing. Thank you.